Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, we talked about the management information system. Why we said there are three things. This is the management, we have information, and we have the system, right? So we discussed about what is management and overall there's input and process and output, and there are some feedback things and all. Okay, so management information system, there are three things in it. So we talked about what is management and information and system. Okay, so overall we have a management information system where we have the input processors, output, feedback and control. We discussed that in the last video. Okay, now the feedback can be positive as well as negative and all that. We talked about the feedback mechanism. um, I know how feedback control works. We discussed that. Okay. So overall, the system is defined as a set of elements arranged in an orderly manner because we have to accomplish a particular objective. So this is the Davis and Olson's definition of system, where you arrange the parts of a system, components of system in such a manner that they will help to accomplish a particular objective, right? Now, what could be the example of system? We have a computer system where we have the input process, output process, we have operating systems, compilers, DBMS, and everything is there, and there is a common objective, okay, to process the data and provide information. And we could have a traffic system, education system, business system, and your own digestive system or respiratory system where organs work together to accomplish a particular task. For example, digestion in case of digestive system. Now, a system is such which has a boundaries. For the digestive system has its own boundaries, which is different from a respiratory system. So there are boundaries, and the system works inside an environment. And a system has inside the subsystem, and subsystems are combined by the interfaces. Okay, like this is our system. Outside is environment. This is the environment. Okay, outside is environment and this is my system. Inside these are subsystems, and they are connected, interconnected by some interface. Okay, and this is the system boundary, and it's important. The system boundary is important because out of that is the output, and from this side is the input. Okay, and there are some constraints also that our system has to obey. So this is the overall the system, where we have the inputs and outputs, and the system works in the environment, and a system is a subsystem interconnected by the interfaces, as you could see in this diagram also. This is the black box of general view. Okay, so what are the characteristics of a system? So every system has some specific objective. Okay, so you have to have a specific objective. So whatever you are doing, I mean in the parts of a system and everything is doing, that is only to fulfill that objective, and when it is satisfactory performing, when that objective will be met, right? If that objective is not met, then there is a malfunction. That's simple as it is. Now a system can have a subsystems, but each and everything one should work together for accomplishing that objective. Okay, like we have the transport system. It could have a subsystem like road transport system, rail transport, air transport, water transport. Okay, but they have only one objective: to take people from source to destination. Now an element can be a part of a different system at the same time. For example, you see your skin, it is your body's defense system as well as the input system. In business systems, for example, sales is a part of the marketing system. Okay, it is also a part of the accounting system. So you can have an element part of the many systems, but elements in a system, they are interrelated. They can have their short-term goals, part of a system that can have their short-term goals, but overall they are working to accomplish the particular task. Okay, and they are interrelated. For example, a business system, marketing, finance, manufacturing, etc., they are related to each other. And if a system has a subsystems, those subsystems can have their short-term goals, but overall they are, like for example, a digestive system, mouth is doing its own job, stomach is doing its own job, different from the mouth, but they are interrelated and accomplishing one task, that is digestion.
So in a business system, likewise, there is marketing, there is finance, there is manufacturing. Okay, you have a car business system, for example. One people, set of people are working for the marketing of that car. There is advertisements, there is pamphlets, a lot of things going on. Some people are working on the finance. Some people are manufacturing that car. But overall, they have their short-term goals. Finance, marketing, manufacturing, they have their own goals. But together they are working to manufacture, to create cars and sell them. Okay, that this is the overall goal, because marketing is trying to do what? Is trying to sell those cars are manufactured by the manufacturing unit. Finance is providing the money and banking and all things so that these cars may sell faster. So overall, the selling of the cars is the objective, if our business system is the car business, right? Even if today's we have seen the second hand car business selling. So some people are marketing, they are telling us that this is a great uh, outlet where you can get the cars. So they are doing the marketing and getting the people to get it. Some people are working the finance, some are not manufacturing right now, they are getting the cars to the showroom. Okay, uh, so overall is to get the cars to the showroom, and overall objective is to sell them and make profit out of them. These subsystems have their objectives, okay, short term objectives, and then overall, but they are all working together to accomplish a particular goal. And these elements are interdependent, and systems have a defined structure. They have their structure and their boundary, then subsystems and everything is there, and it has its own structure. And then your system reacts with the environment, wherein either they take inputs or they take outputs. For example, I told you car manufacturing. So people may come to get your car, and people, the cars will be sold to the people also. Okay, and all systems have a life cycle, that the birth, evolution, decay, death of a system and all that. And all systems have the boundaries. Okay, now what are the types of system? You can have a deterministic versus probabilistic system. What is a deterministic means where you know what are the inputs and you exactly know what outputs have to be. Okay, that's called deterministic system. So it operates in a predictable manner, that we know exactly that this is going to become and this is going to be the output. But in a probabilistic system, we don't know exactly what output can be. There can be a little bit, we cannot predict it, so that means there can be a little bit of error, or there can be a little bit of variation in the output, so we cannot predict that. So that is the probability, that the probability is that the output will be this, we can say like that. The probability is like when a probability was say, probability is it may rain, but we don't know exactly will it rain or not. It may rain or it may not, right? So in a probabilistic system, you are guessing, you are not exactly telling what the output is. But in a deterministic system, you exactly know what it's gonna be. Now there are open systems versus closed systems. In an open system, you get your system interact with the environment and accordingly adapt. So we can have the adaptation, we can adapt as per the inputs and all, how an environment is behaving and all that. But in case of closed system, there are rules, you cannot interact or change yourself as per the environment. Now one of the systems we have is called the human machine systems or user machine systems. So usually the information systems we talk about, they are like human machine systems, where we have human component and the machine component. And if you talk about the human component, okay, they are open and they are probabilistic. Okay, but in case of combination of no machines, if you say machine elements, they are deterministic and closed, because machines, they cannot change of their own, but humans can tweak a bit, they can change as per environment, they can change parameters, they can do different things. But and they are probabilistic, they may behave differently. But in case of your machine, the machine is a closed system, it has a particular rules to do, it will exactly do what we know. If we give this input, the output is going to come like this. So that's why it's a deterministic system and it is closed. But human part, it is open and it is probabilistic. Now if we talk of the information system, it's an arrangement of components that interact to support operations, management, and decision making, uh, what an organization requires. So organization requires that you have to uh, get the inputs, you have to get the outputs. Okay,
So you are an information system is a, in an example of the MIS, right, which basically fulfills all the requirements of a system. So what you want to do, you want to support the operations, okay, the operations of a system. There is the management, you want to manage that particular system. And why you want to have the management? Because you have to do the decision making, okay. uh, so all these things what an organization requires is what's called as an information system. So let's talk in detail now what is an information system, okay. This is where the computer science comes into play. So we should be able to define what's an information system, what are its components, what is its history, okay. And there was one argument which was saying, does it matter, does IT matter? It was done by the Nicholas Carr. Let us have an idea of that. What does it mean, does IT matter? Okay, so this is my information system, which has actually three, this is a triangle, and three vertices of a triangle says three things. That's the people, process, and technology, okay. So we have firstly the people, which help to support decision making, coordination, control, analysis, and visualization in an organization. That means people are the thing which will do all the things in an organization. Then there is a process, okay, those who collect, that processes, stores, and disseminates information. So you have to do the processing of the data. Here, um, we the people are actually to help support decision making, okay, coordination between the components, analysis of the data, and a lot of things. And processing is the process the data to disseminate the information. And technologies like hardware, software, network that supports the business process and people. So technology is which supports people as well as process, and helps us to do stuff which people and process is trying to do. It is actually done by the technology, because it's overall then the software, hardware, network, internet, and everything which makes it happen. So information system has all the three dimensions working together, like people, process, and technology. So there are many information systems in organizations. Let's zoom in. Like if you see the sports analytics, Coursera.com, and Boeing Corporation. Let me talk about the Coursera. Coursera is which provides the courses which have the off-campus mechanism. That means you do not need to do degrees and all and go to the campus. Rather, you can do all online courses. So what it does is it provides you with the online education. Okay, uh, it has the best courses of the world. They're online, they are for free right now, but if you go for certifications then it's not free. And what it has is it has a video lectures and online assignments that are offered for free. And it costs a nominal fee for a certification of a completion. If you want to get certification, then they charge you, otherwise it's a free. So it's kind of an information system. So likewise, if you see the others here, like Boeing Corporation, okay, they have what's called as an SAP system. Okay, you just Google what is SAP, and SAP for you, I must tell you, it's a highly paid jobs. It's an ERP, and we discuss ERP later on, and SAP also discussed later on in our last unit. Okay, but what is SAP? You should be knowing it because it's a great career opportunity for you. Um, so that's why I'm saying it's an ERP, so enterprise wide information system that handles procurement, manufacturing, marketing, sales, employee benefits. I mean, basically all the business units today, they are using the SAP. The big business units, they are using the SAP. The SAP is helping them to do everything. Because there's a lot of data in a company. There's a big company. They have a lot of data. They have a lot of employees, their salaries, then the products, their manufacturing, the analysis part. Is the production going in a proper way or not? Okay, the analysis of that. Is the quality going good or not? Is the sales executives working properly? Each and everything is managed by the SAP, the SAP. Okay, it's an information system which helps
to manage all of the organizations. The big enterprise when you say, that means the big companies where there is a thousands of people working. Okay, their whole data and the products and everything is managed by this piece of a system called SAP. And you should know, it's a, if you do the SAP engineering and you work on some particular module of a SAP, maybe you work on a back end of a SAP, maybe you work on a front end of a SAP, maybe you work on a network side of a SAP. So there are jobs which are highly paid jobs. Basically in a company there are basically three types of managers. There are these are the, you know, the managers which are interacting with the actual, the processing happening, they are there. Then there are the tactical managers. Okay, what we call the middle level managers. And then there are the top level managers. Okay, these are the low level managers which work here. These are the middle level managers which work here. And then there are top level managers, so CEO and all, which work on a top, the boss. They take the strategic decision. Then there are the tactical decisions also to be taken to work, and then there's operational decisions also to be taken. The example I can give you is, for example, आपके पास एक शॉप है, ठीक है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, बड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर है, like pick and choose. Okay, in Lal Chowk we have pick and choose. It's a pick and choose. They are coming, hundreds of products are coming, and there are people inside working. Okay, एक तो सेल्स काउंटर है, लेकिन अब जो ये आपके पास शेल्व्स हैं, इसमें शेल्व्स हैं जहाँ पे ये चीज़ें लगी हैं, ठीक है ना। जो ऑपरेशनल मैनेजर होगा वो देखेगा कि भाई साहब जो शैम्पूज हैं वो यहाँ होने चाहिए, ये जो चाय वगैरह है वो यहाँ होनी चाहिए. So these decisions will be taken by the operational manager, which is operating right now inside the business. Okay, this is my business, and there are operational managers who are working there, and they are making small decisions for the operational purposes of the business. ठीक है ना भाई, साबुन यहाँ रखो, ब्लेड्स यहाँ रखो, ये जो ग्रोसरी है वो इस साइड रखो, अच्छा कुकीज़ वगैरह वो इस साइड रखो, ठीक है, जिस हिसाब से इनको लगेगा कि बेस्ट है फिर एक्सेस करना और फिर ये करना. सो दे विल नॉट अलाउ इट टू जंबल अप, क्योंकि जंबल अप नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जंबल अप होगा फिर कोई चीज़ मिलेगी नहीं वहाँ. ठीक है, तो ये एक ये जो ऑपरेशन काम, बिजनेस के काम के लिए जो डिसीजंस हमें चाहिए होंगे, वो एक ऑपरेशनल मैनेजर इस लेवल पे करेगा. इट्स अ बिग, एज यू कुड सी ट्रायंगल में सबसे बड़ी बेस है, यानी कि वो ज्यादा डिसीजंस लेने होते हैं. उसके बाद कभी कभार जो एक टैक्टिकल मैनेजर इसके पास होगा, जो कि इनका हेड होगा वहाँ पे, इन ऑपरेशन मैनेजर्स का हेड जो होगा, दैट विल बी टेकिंग टैक्टिकल डिसीजंस. सो दिस विल बी अ मिडिल लेवल मैनेजर. वो फॉर एग्जांपल फर्ज कीजिए कि हम देख रहे हैं कि कोई प्रोडक्ट जो है वो कम बिक रहा है, कोई प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है. ठीक है, जो ज़्यादा बिक रहा है उसके शेल्व्स यहाँ खाली हो रहे हैं, तो टैक्टिकल मैनेजर जो है वो ऑर्डर करेगा बाहर. वो अब बताएगा कि नहीं जी, हमें ये जो प्रोडक्ट ए है, इसको अगर हम 20 पीसेस मंगा रहे थे, 200 पीसेस मंगा रहे थे, नहीं जी 2000 पीसेस मंगा लीजिए. ठीक है, और कोई प्रोडक्ट बी था जिसको हम 200 पीसेस मंगा रहे थे और हमने देखा कि उसमें 10 ही पीस बिके हैं, तो हम कहते कि भाई इसके कम कीजिए, आप 20 पीस मंगाइए इसको. ठीक है, ताकि ये ज़ाया ना हो. सो ये डिसीजंस जो होंगे, मान लीजिए ये महीने में एक बार होंगे एंड ऑल दैट, लेकिन जो ऑपरेशनल जो डिसीजंस है वो हर बार ही लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो एक मैनेजर हर बार ही करता है, भाई यहाँ से क्यों बनाओ, नहीं जी आप यहाँ जाइए, ये इनको प्रोडक्ट्स को यहाँ रखिए, इसको ऐसे कीजिए, इस शेल्फ में रखिए, उस शेल्फ को खाली कीजिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ऑपरेशनल मैनेजर को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं फॉर द नो स्मूथ फ्लोइंग ऑफ द बिजनेस. टैक्टिकल मैनेजर जो होता है, मिडिल लेवल मैनेजर, उसको ओवरऑल वो स्टैटिक्स देखता है, उसके बाद वो महीने में एक दो बार वो डिसीजंस लेता है, ज़्यादा नहीं. ऑपरेशन मैनेजर तो डेली हर बार हर फ्लो में वो डिसीजंस लेता है, कुछ ना कुछ डिसीजंस लेता रहता है. ठीक है, लेकिन एक टैक्टिकल मैनेजर जो है वो महीने में मान लीजिए एक दो बार उसने डिसीजंस ले लिए, डिपेंडिंग उसने उसने देखा, ये स्टैटिस्टिक्स देखा अपने डेटा का, उसने देखा कोई प्रोडक्ट ज़्यादा जा रहा है, कोई प्रोडक्ट कम जा रहा है, इस प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, इस प्रोडक्ट में कंप्लेंट्स हैं, इस प्रोडक्ट में ये है, तो अकॉर्डिंगली ही विल टेक डिसीजंस कि हमें क्या ये प्रोडक्ट, जैसे हमने डायपर्स लिए हैं, तो डायपर्स इन लोगों ने लाए हैं, लेकिन इसमें आती है कंप्लेन कि भाई साहब इसमें लीक हो रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम्स है, इसमें वो प्रॉब्लम्स है,
तो टैक्टिकल मैनेजर जो है मिडिल लेवल मैनेजर है, क्योंकि ये मिडिल लेवल मैनेजर है, जो मिडिल लेवल मैनेजर है वो डिसीजन लेगा कि जनाब हमें ये प्रोडक्ट नहीं लाना चाहिए, हम दूसरा प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। जैसे पैम्पर्स वाले हम डायपर लेंगे और ये जो हमने लाए थे दूसरे कंपनी के ये नहीं लाएंगे, फॉर इसमें कंप्लेन है ना, ऑल दैट। सो दीज डिसीजंस विल बी टेकन बाय द टैक्टिकल मैनेजर। अब जो स्ट्रैटेजिक मैनेजर होता है टॉप लेवल मैनेजर, यानी कि टॉप लेवल मैनेजर को क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारा जो बिजनेस यूनिट हमने खोला था, ये हमने खोला था इस्लामिया कॉलेज के बाहर, और हम देख रहे हैं कि इस्लामिया कॉलेज के बाहर इसकी उतनी मांग नहीं है, या इस्लामिया कॉलेज के पास बहुत सारे शॉप्स ऐसे ही आ चुके हैं। अब जब बहुत सारे शॉप्स ऐसे आ चुके हैं, वहां हमारी बिजनेस अच्छे से रन नहीं कर रही है, वी वुड लाइक टू गो फॉर द अदर प्लेस and put our shop there, departmental store there. But this decision is a strategic decision. This cannot be taken daily like operational manager. भाई यहाँ से उठो तो वहां जाओ, नहीं हो सकता ना। तो टैक्टिकल भी नहीं होगा ये कभी। अगर हमने 4 साल किया काम या 2 साल काम किया, 2 साल के बाद मैं देख रहा हूं कि नहीं यहाँ पे दुकानें हो गई हैं, सो वंस इन अ लाइफ टाइम इट कुड बी कि मैं अपनी दुकान इस शॉप को कहीं और लगा रहा हूं, किसी और जगह पे लगा रहा हूं, ठीक है ना। सो दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ strategic decision and this is taken by the top level managers। जो एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन होती है, जो सीनियर मैनेजर्स हमारे पे होते हैं, वो डिसीजन मेकिंग जो करेंगे वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन हो करेंगे। लेकिन जो ये डिसीजन मेकिंग सारी हो रही है, ठीक है, हम कह रहे हैं इसको, ये एंथोनी ने ये दिया था, एंथोनीज ट्रायंगल इसको बोलते हैं। जो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें जो मैनेजर्स हैं वो लेवल, उनकी उनकी जो लेवल है, जैसे टॉप लेवल हो गया, फिर मिडिल लेवल हो गया और लो लेवल हो गया। और मैंने कहा लो लेवल जो होता है वो बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, और टैक्टिकल कभी कभार एक टैक्टिकल डिसीजन लेता है, एंड स्ट्रैटेजिक तो बिल्कुल ही समटाइम्स दे टेक दैट डिसीजन विच इज वेरी स्ट्रैटेजिक टू द बिजनेस। ओके, हम पूरा यूनिट ही बंद कर रहे हैं और यूनिट कहीं और चला रहे हैं, लाइक दैट, या बिजनेस ही वाइंड अप कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई साहब आजकल जो है इसका ट्रेंड नहीं है, आइसक्रीम्स का ट्रेंड है, तो आइसक्रीम की बिजनेस शुरू करेंगे, एंड लाइक दैट। और बड़े बिजनेसेस में भी हम वहाँ पे भी चेंज करते हैं वो। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक प्रोडक्ट लाया, फिर वो दूसरे प्रोडक्ट पे काम करते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। एंड जैसे हनीफ मोटर आप देखो लाल चौक में, वो बाइक्स पे कर रहा था, फिर उसको देखता है कि नहीं आजकल विंटर्स हैं तो गैस जो है उसने टर्की से वो गैस हीटर्स मंगवाए। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट कुड बी अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन टू चेंज द टोटल बिजनेस। ओके, दैट इज डन विद द टॉप मैनेजर्स ओनली। एक बंदा जो वहां पे काम कर रहा है वो ये डिसीजन नहीं ले सकता कि मैं बिजनेस ही चेंज करूंगा, ठीक है। जैसे कोई कॉलेज है वहां पे वो बीसीए का कोर्स कराते हैं। अब बीसीए कोर्स में जो एक एचओडी वहां पे होगा, वो देखेगा, वो ही इज अ मिड, ही इज अ नॉट इवन मिड लेवल, ही इज अ लो लेवल मैनेजर, जो कि ये देखेगा कि उसका जो बीसीए के कोर्स है वो चल रहे हैं ठीक से नहीं, एग्जाम लेना है, ये डिसीजन करना है, इस क्लास में बैठेंगे, वो उस क्लास में बैठेंगे, यहाँ पे शोर हो रहा है, वहां पे वो बच्चा ये कर रहा है, इसको शॉर्टेज निकालो। तो ये छोटी छोटी डिसीजन वो करेगा। लेकिन अगर हमें बीसीए वाइंड अप ही करना है, हम देख रहे हैं कि भाई बीसीए में स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, तो हम बीसीए एज ए प्राइवेट कॉलेज नहीं करेंगे, हम बीबीए करेंगे या बीएड के ऊपर करेंगे, ठीक है ना, हम बीएड का कोर्स करेंगे। सो ये बंदा जो है वो एचओडी नहीं लेगा, वो तो टॉप लेवल जो जिसका वो कॉलेज होगा, ठीक है ना, जो उसका ओनर होगा उस कॉलेज का, वो ले सकता है। जैसे हमारे पास एक कॉलेज यहाँ पे नजदीक में ही था, वो बीएड कोर्स कराते थे, क्योंकि कश्मीर में क्या होता था, बीएड 1 साल का होता था, और बाहर आप देखेंगे आउटसाइड कश्मीर वो 2 साल का होता था। इसलिए बाहर से लोग आते थे यहाँ बीएड करने, तो इसलिए बीएड की एक अच्छी बिजनेस भी थी। तो यहाँ पे जो लोग थे कॉलेज ओनर्स, वो बीएड का कोर्स कराते थे। अब बीएड का कोर्स कराते थे क्योंकि लोग आते थे बहुत सारे, वो इवन आते भी नहीं थे कॉलेज, वो फी भरते थे एंड ऑल दैट। तो और उनके फिर वो एग्जाम के वक्त आते थे, तो इनको कुछ खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी, एंड दे हैव 400 स्टूडेंट्स पर कॉलेज। उनको मुंह मांगी आप जो भी उनको बोले तो वो वहां से देते थे फी वगैरह एंड ऑल दैट। तो इनकी यहाँ बिजनेस चलती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने यहाँ पे 2 साल का कर दिया। अब उनको वहां पर भी 2 साल का है, यहाँ पर भी 2 साल का है, तो अब स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं। तो जो वहां पे टीचर्स हैं या वहां पे जो उन्होंने एचओडी रखा है, वो ये डिसीजन लेगा कि मैं बीएड को बंद करूं? नो, ही कांट टेक दैट डिसीजन। इट इज डिसीजन, दिस डिसीजन इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन कि भाई मेरे को बीएड नहीं करना।
अब मैं बीबीए में जाऊंगा, बिजनेस, क्योंकि बीबीए एंड एमबीए इज काइंड ऑफ जहाँ पे लोग स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। इवन बीसीए एंड एमसीए वहाँ पर भी कम जाते हैं। तो मैं बीएड से या बीबीए एमबीए में जाऊंगा, ये डिसीजन कौन लेगा? ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन है, दिस विल बी टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजर। अब इसमें अगर एजुकेशन की बात करूं तो इसमें टैक्टिकल डिसीजन कौन सा होगा? टैक्टिकल डिसीजन में ये होगा कि भाई साहब हमने इस साल जो टीचर्स लिए थे इनमें ये प्रॉब्लम्स थी, तो हमें इस साल ये ऐसे टीचर नहीं है, हमें पीएचडी वाले टीचर लाने हैं। सो दिस इज अ टैक्टिकल डिसीजन। सो ये टैक्टिकल डिसीजन लेगा आपका मिडिल लेवल मैनेजर, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल होगा कॉलेज का, सो प्रिंसिपल विल बी द कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपके इस इस्लामिक कॉलेज में प्रिंसिपल ही टॉप लेवल मैनेजर है, ठीक है। यहाँ पे जो है टॉप लेवल मैनेजर आपका प्रिंसिपल होगा प्राइवेट कॉलेज में, और एचओडी विल बी द लो लेवल मैनेजर, जो कि ऑपरेशनल चीज़ों को देखता है, ठीक है ना। और जो आपका मिड लेवल मैनेजर होता है वो एक बड़ा डिसीजन लेगा, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। ऑपरेशनल मैनेजर जो होगा वो डिसीजंस लेगा जो कि बहुत बड़े नहीं होंगे, जो फ्लो ऑफ द बिजनेस के लिए ठीक रहेंगे, ठीक है ना, जो हर बार ही लेने हैं, हर दिन लेने हैं, हर साथ लेने हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ डिसीजन लेना ही पड़ता है, ठीक है। जैसे एक एचओडी है, उसको लेना पड़ता है कि भाई ये टाइम टेबल रखो, भाई आप ये पढ़ाओ, अच्छा जी ये टीचर आज बीमार है, इसकी जगह आप आ जाओ, इस टीचर को आज एग्जामिनेशन ड्यूटी है, आप आ जाओ, दूसरे टीचर को बोलते हैं आप आ जाओ। ये हर बार ये डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सो दीज डिसीजंस आर द ऑपरेशनल डिसीजंस, दिस इज टेकन बाय द लो लेवल मैनेजर। देन अगर कोई बड़ा डिसीजन है, दैट्स कॉल्ड टैक्टिकल डिसीजन, इट इज टेकन बाय द मिड लेवल मैनेजर। एंड और सबसे बड़ा डिसीजन जो होगा, दैट मीन्स अल्टीमेट डिसीजन, जो कि सिर्फ एक बॉस ले सकता है, जो ओनर ऑफ द बिजनेस होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन, ठीक है ना। होपफुली यू गॉट इट, वी कंटिन्यू विद दिस टॉपिक नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना। इफ यू हैव क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी in WhatsApp or Telegram, and hopefully you get it. It's very simple. It's just a theory kind of a thing. So we'll see you in the next lecture. Until then, ma salama.